Yes. Now, welcome to the new session in the Python programming online series. In this series, we are going to explore the Python programming, the basics of Python programming. We have started with the very first thing, like how to install the Python, and then we move towards the data types, and then we have seen the what are the different conditional statement, how to execute the statement conditionally using the if else, how to use for loop, how to use while loop, and then we have seen the different advanced data types like a list, set, tuple, and a dictionary. Okay, and after that we have seen some advanced topic like a functional programming. Also, there are special functions are there like map function, filter function, reduce function, lambda function. How to use that function? Yes, we have already seen that. So today we are going to explore the new topic and new approach in the Python programming. Yes, Python supports the functional programming. Okay, and so it supports the procedure oriented programming also. So it means that your program can be divided into the number of tasks. The program can be divided into the number of function. And yes, whenever we need, we can call that function. Yes, when we call that function, a statement that we have written inside that function get executed. Okay, and yes, using that function, we can execute our whole program. Okay, so yes, that is possible. But the Python also support the another type of the approach while of the programming, and that is the object-oriented programming. Yes, until now we have not written any class. We are not, but we have created the lots of objects. So whatever the variable you are creating, all the variables are not, that are not the variable that are the objects of class integer, objects of class float, object of class tuple, object of the class list, object of the class dictionary. Yeah, so that all are the objects. So actually we are using the object oriented programming, but we have not followed that approach for developing our program. So yes, we can develop our program by using the fully object-oriented programming. Like whatever we want to execute, yes, instead of creating our program as a simple program like C++ language, what we can do, we can create a class, and yes, we can create a class of that particular data, and yes, we can include some function related to that data, and yes, we can create the object of that particular class. Yeah, so that is object oriented programming. Yes, you might have learn that object oriented programming in a C++ or in Java. In Java, actually everything you have to write down in a class only. Main function also you should include in a class only. So Java is a fully object oriented programming. Python is also fully object oriented programming, but it still support the functional programming. Okay, so yes, let's start with the today's notebook. And yes, it is a class and the object. Yes, I have shared all this notebook, further notebooks, class and objects and inheritance, all this further notebook I have shared on the Google Drive. So you can download that notebook and you can learn from that. Okay, so very first thing is you have to go to the cell and all output and clear all outputs. Okay, and then one by one you can execute it. Okay, so first you have to, yes, read it out. What is this statements? Yes, I have also added some comments here in front of it, and yes, using this you can able to understand that. Okay, so yes, we'll start with the this object-oriented paradigm approach of the Python. Yeah, so it means that a principle according to which a program is organized to carry out a given task. So which approach we are using to perform a given task? Yes, the very first approach is a structured programming. Yeah, second one is a functional programming, and third one is a object-oriented programming. Okay. But here in OOP paradigm, we encourage for creation of the interaction of the objects. So yes, whenever we want to communicate with the data, yes, we are including that data in a class, and yes, we will write a function, and using that function, we will communicate through that data.
Okay, so yes, these are the two first uh, very important topics in object-oriented programming: class and the objects. So yes, so what is class and what is object? We will first discuss. So what is class? Class is you can consider a class is a user-defined data type. It is a user-defined data type. A class contains a data and methods that can access or manipulate this data. Okay, so class contains the data and methods. Okay, the class contains data and method. Okay, so as this is the same class that you have learned in C++ and the Java. So there also the class contains the data and the method. And yes, we are accessing the data through the method. We're accessing the data through the method. And yes, we will also calculate or manipulate the data using the method. Okay, suppose if you want to do some operation on that data, yes, we can do by using the some methods. Okay, so thus a class leads us to bundle the data and the function together. Yeah, so yes, using the class, if you are creating the class, and yes, if you have created the class and that class contains the data and the function, you can say that the class is a bundle of, it is a bundle of the data and the function. Class is an enclosure where you can find out the data and the function together. So yes, it is a container. It is a container where you are putting the related data in the related function, and yes, yeah, you are creating the class of that. Okay, so class is a generic in nature, just like take an example of integer, float, okay, and the character. These are just generic in the nature, but whereas the object is specific in nature. So if I talk about the integer, yes, I'm talking about the integer class. So what is the common feature of the integer? So the common feature of the integer is the number without decimal point. This is the common feature. So what is the integer class? So it is generic in nature, which will define that the integer class is having the generic nature that it contains the number which is not having the decimal point. But whereas if you create the object using the class, if you create the object using the class, it is specific in nature. Like suppose you are using a equal to 10 and b equal to 20. So a is having the value 10, which is specific, and the b equal to 20. So b is having the value as 20. So yes, the object is different. Different object is having the different values, but the class is the generic in the nature. That's why the class is called as a blueprint of an object. That's why the class is called a blueprint of the object. So what the object is, that will define by the class. What the object look likes, that will define by the class. Whereas the object is also called as a physical existence of a class. If you create the class, it doesn't allocate the memory. It doesn't allocate the memory. It is just a template. You are defining the only the template. Okay, so if you are only writing the class, it doesn't mean that you can able to store the data inside it. If you want to store the data inside it, you have to create the object of that particular class. So yes, what is the class? Class is a blueprint of the object, and yes, object is the physical existence of a class. Object is representing a class. Object is representing a class. So it is a just object. So if I'm talking about the student, so yes, if I'm talking about the student, so student class is a generic in nature. What are the features, what are the methods that the student are having, that I'm talking about? So that is generic in nature. So it is a blueprint, it is a template. But if I'm talking about, suppose Chetan Shinde or Shiva Patel or the Akash Yadav, these are the objects of the student class. These are the object of student class. So yes, so Chetan Shinde, this is the object. This is the object, actual existence. If the real existence, if you're talking about, you are talking about the object. But what is Chetan Shinde? What is Chetan? Chetan Shinde is the student. So yes, you can consider this student as the template of the Chetan Shinde. So yes, to create that particular object, what you should contains, that will define by the student. That will define by the student class. So yes, we can create as many objects from the given class. Yes, we can create the many object.
You have to create only single class, but you can create the number of the object. Yeah, and every object is having the different values. Can have the different values, can have the similar value also. Okay, take an example of the some real time example, like a bird is a class. So if I'm talking about birds, so yes, if I'm talking about birds, what came in front of my eyes? So yes, birds are having the wings. Yeah, birds are having some characteristics, like they are hollow, and yes, they can fly. These are the generic natures of the bird. But if I'm talking about the object of bird class, yes, sparrow, crow, eagle, these are the objects of the bird class. So common features are there, but with the common features, the sparrow is having its own existence. Sparrow is different from crow. Crow is different from eagle. So this appearance is different. Its appearance is different, but its generic nature is same. It's generic. All other birds. All are birds. Okay. Second example is player is a class. And Sachin, Rahul, Kapil, these are the objects of the player class. Yes, if I'm talking about the cricket player, yeah, these are the player of the cricket game. Okay, so player is a class, cricket player is a class, and Sachin, Rahul, Kapil, these are the objects of the cricket player class. Okay, so there Sachin is having its own record, Sachin is having its own style, Rahul is having own style. Okay, so Kapil is having the all-rounder, so he can bat, he can ball. Okay, they are implementing their own method also, or they are having its own existence also. But what are the common feature? They are playing a cricket. Okay, they are playing a cricket. Yeah, they can bat, they can ball. These are the different features of the player class. Flower is a class, and the rose, lily, gerbera, these are the objects of the flower class. Yes. So these are, if I'm talking about what is rose, what is lily, what is gerbera, these are the, I'm talking about class. I'm talking about class. What is rose? Rose is a flower. What is lily? Lily is a flower. Getting that? So instrument is a class where the sitar, flute are the object of an instrument class. Yes, are you getting, students, are you getting this, or class and the objects? Type yes in the chat box if you get this class and the objects in a very detail, because this question is always asked in the interview. Explain the class and the objects. Explain class and the object with some examples. Yes. Okay. Okay. Yes. Okay. So let's see some examples of the class and object. Like I equal to 10. I is a object. I is the object of the integer class. Why integer? Because 10 is inside it. Okay, 10 is inside it. So 10 is an integer. So that's why the type of the I is integer. Type of the I is integer. Okay, let's print the type of I. Type of I is integer. Getting that? Now let's take a second example as A equal to 3.14. So yes, A is a type of the float class. A is the type of the float class. If I'm talking about S, so S is a type of the str class. Getting that? Okay. If I'm talking about LST, LST is the object of the list class. LIST, list class. If I'm talking about TPL, then yes, I'm talking about the TPL is the object of the tuple class. So in this way, we can create the object. Yes, here we can create the number of objects. So we can have the 2 integer, 4 integer, 10 integer, or hundreds of the integers. You can create the number of objects of a particular class. Now these are called as built-in classes or ready-made classes. These are the built-in classes. We don't have to write it. It is already there. Okay. So an object typically contains the data and method that let us access or manipulate the data. Yes. Now here S1 is a object of type what? Yes, can you tell me? Yes, anybody tell me what is the type of S1? String. Yes, you can type in the chat box. What is the type of S1? str. And what is the type of S2? Type of S2, both are str. Okay, type of S1 and the type of S2 both are str. Okay, so it means that here there are the two objects
there are two objects having the same classes. Okay, so S1 is having the same class, S2 is having the same class, but look at its data. What is the data of S1? The data of S1 is Nashik and the data of S2 is Mumbai. So both are different. Both are different. So data might be different, but they are having the same methods. They are having the same method. Now, how to get the method of an object? Okay, to get the method of the object, you can, yes, let me separate out this. Let me insert one more cell, and yes, we'll print it individually. Okay, so yes. Okay, so first to get the what are the methods of that particular objects. So str is a built-in class. Now what is the method of that class? We don't know. To get the method of the objects, you should use the dir function. So dir function is used to get the method of the object. Let's print it and let's see here. Yeah, we have to first run this first and then we have to use dir as well. Okay, so you see here, there are the underscore add underscore class underscore contain. Now these are called as the private methods. These underscore and underscore, these are called as the private methods. Okay, capitalize, case for, center, count, encode, end suite. We have seen some of its method like index, is alphanumerical, is alpha, is ASCII, is decimal, is digit, is identifier, is lower, is numeric, is printable, is space. These are called as the method strip, R strip, okay, L strip, split lines, translate, upper, Z fill, all are the methods of S1. Okay, let's print the method of S2. Yes, is it same? Is that both S1 and S2 methods are same? Yes, it has to be same, because if we are talking about the methods, all the methods are the same, or all methods are shared by all the objects. All the methods will be shared by all the objects. So the method of the or the function of S1, though the data is different, its function are same. S2 data different, but the function is same. Yes, are you getting this? देखो कैसे होगा अगर आपका if you have created the more than one objects, ऑब्जेक्ट का डेटा अलग हो सकता है, लेकिन मेथड अगर बोले, मेथड मतलब फंक्शन, all the function should be same, or function has to be same. Yes, are you getting this? Type yes in the chat box अगर समझ में आ गया आपको, या or should I repeat it? Yes, very simple. क्या करना है, डेटा अलग हो सकता है, ओके, डेटा अलग हो सकता है, लेकिन उसका फंक्शन अलग. जैसे कि स्टूडेंट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट, okay, the name of students are different. Okay, the name of first student is different, name of second student is different, but its functions, whatever the function implemented for the or the rules implemented for the student are same. Okay, so that is the meaning of it. Okay, so data might be different, but the function is same. Okay, the specific data in an object is often called as an instance data. Okay, so if you have created a data which is specific to an object, it is called the instance data. Generally, we always create the data as an instance data, because we have to differentiate the object from object. So that's why we are storing the data as an instance data, or the attribute of object. Method in objects are called as a instance method. Okay, and if we create our own class, these are often called as a user defined class. Yes, and if we create the object of user defined class, each object is called as a specific instance of a class. Let's see how to create the class. Let's see. The creation of the class is very simple. Okay, let me insert one cell here and let's see the syntax of class, syntax of creation of class. Okay, so how to create a class? To create a class, so firstly you have to write down the keyword as a class. Okay, so first write down the keyword as a class, and after the keyword, yes, you should give the name of the class. So yes, what is the name of the class? Suppose I'm giving the name of the class as my class.
Okay, my class, and after the my class you should put the colon. Okay, you should put the colon, and after the colon, so what is the data, what is the data you have to create, or what is the function you have to create, all these things you have to write down here. Just like here I'm writing one method like a display method. So yes, def and yes, display colon. And now what is the difference between the class method and the normal method? So if you want to write down the normal method, display method, we will write down the display as like this. So display, and then suppose I want to, so the display is taking the one variable x, and yes, if I want to print it, yes, so here, or simply x. Okay, so this is the normal method, this is the normal method, but this method I have to include in a class. I have to make this method as a class method. So how to make this method as a class method? So very simple. If you want to make the method as a class method, so you have to first write down the first argument as a self. First argument should be the self, and the second argument is the argument that you want to pass. So here actually the display is taking only single argument. Display is actually the display. While calling the display, we are only passing only x. Self will be automatically passed. Self is called as the address of the object. Okay, let me explain you with some example. Like suppose I'm printing the x here. I'm printing x. Okay, so let's create the object of my class. So my class, and yes, so x is equal, or simply a is equal to my class. So in this way we can create the object of my class. And now object A is having the how many methods? We can print the methods of the object class. So yes, how to create, how to print? Very simple, dir. Okay, let's see here. This A is having yes, look at here, the last one, it should be display. Yeah, so this is the display, and it is not having the underscore. So yes, and if there is no underscore, so it is a public method. It is a public method. Now these are all the underscore, these are called as the private methods. Okay, these are the private methods. Okay, so it is by default it's present. If you create any class, by default all the class should have this method. It is automatically, it is get included here. Okay, but here you can see here I have my method also, display method is there. Now can I call that method? Yes, can I call that method? Very simple, you can call the method by using the object name. So a dot display, and let's see here. Display is having missing one additional argument. Yes, it should have the x. So yes, I'm giving the x as 10. So yes, display 10. So yes, I'm getting the output as 10. Yes, are you getting this? So how to create the class? How to create the class? So simply my class and the name of the class, and then colon, and whatever you want to write the function, that function you have to write down here. If you don't want to write down the function, this called as a empty class. This called as an empty class. That is also work, but here now this is the, now here if I'm running this, I'm not getting any error. So yes, if you are not writing this pass, then you are getting the error. You are getting the error. Getting that? So yes, if your class is not having any method, you have to write down the pass, pass. Okay, same as that of your definition. Okay, so if you are writing the definition, any definition, so definition, suppose display, and you want to write down the, you don't want to write down, you want to write down a simple method, pass, empty function. So yes, you should include the pass here. You should include the pass here. Same for the if statement. Suppose if suppose 10 greater than 5. Okay, then you don't want to execute anything, but in else you want to execute something. Okay, so like suppose 10 less than suppose 15. Okay, 10 less than 15. Let's see here.
10 less than 15. Okay, so let's run this, and yes, 10 less than 15 will get executed. Okay, so but suppose if I'm running this 10 greater than 5, so this condition is true. So let's see, there is no output, there is no output. So because you have written the pass, so pass has to be written when you don't want to include any statement. Okay, if you don't want to write any statement, then you have to include a pass there. Okay, generally we having the empty class is not having any meaning, so that's why generally we put the some functions here. We will put the functions here. Okay, so like definition, display, and self is nothing but the object address of the object. So because we are calling the display with this a object, with the a object, so yes, display will say that what is the address of that object. So self is contains the address of a. So yes, let me show you that also. So if I print the self, let's see here. So it is the address of the object. It is the address of the object. You can also print the address, ID of a, both should be same. Okay, yes, it is a memory address actually, and it is the, yeah, it is the actually object, my class object, and this is the actually memory address. Okay, but this address, this actual address will be passed to this self, and yes, by using this self, yes, we can the class can have the knowledge that who has called this display. Object A has called, or object B has called, or object C has called, who has called it. Okay, so because there is a class specific data is also there, class specific data. A data is different, B data different, C data different. Okay, so let's in the next example we'll see how to create the class specific data, Okay, but before that, let's see what is public and private method. Yes, so what is public? Public means the members of a class which can be accessible from the outside of the class, like using the object. So if you can able to access the data in the method using the object, then that member is called as a public method. Like this display. Display can be called by using the object. So you can consider that a display is a public method or the public member of the object A or the my class. Okay, public method of the class my class. Getting that? So it is good idea to keep data in a class inaccessible from the outside in the class and access it through the member of the class. Yeah, so it is a general thing, like the data should be hidden in the class. Data should be hidden and it should not be accessible outside the class. And if you want to access through the function. If you want to access through the function only. So yes, access that data through the function only. Okay, so let's create one class, employee class employee. And yes, we have written the two functions, set data and the display function. Set data will set the data, like it will take the three arguments n, a, and s. N, a, and s. Self contains the address of the object. Now every object is having its own address, different addresses. Okay, so let's see here. First I have created the data. I have created one object here, e1 equal to employee. So yes, when I call e1.setData, so yes, the address of e1 get passed to the self. So you can consider that self is a pointer to e1. Self is a pointer to object e1. Self is the pointer to object e1. Okay, so yes, this self is pointing to e1. Okay, and what is this NAS? The NAS we have passed it here. N is Ramesh, A is 30, and the S is 25,000. Okay, now this NAS is the local variable. These are called as a local variable because these are function variables.
Function variables are always the local variables. It get created during the class when you are calling the function, and after execution of that function, the variable get destroyed. This is called as a temporary variables. Now you want to create the object related or the object instance data. How to create the object instance data? To create the object instance data, now this self is pointing to E1. Self is pointing to E1. So I want to create the E1 name. I want to create a data having the name as a name, and yes, I want to store this whatever the content of n inside it. So yes, how to create? If I'm not using this self dot, the meaning is here I am creating the another temporary variable because it is created in the function. So yes, underscore name equal to n. So yes, n is also temporary variable, underscore name is also temporary variables. When the function get over, this variable get destroyed. Now I don't want to be destroyed this variable. I want to make this variable as a object specific. So how to make this as object specific? So create this variable inside the object. So how to create inside the object? Very simple. Use the self pointer. So self dot and underscore name. Underscore name will create the now new variable inside the E1 object having the data as n. Getting that? And yes, we are creating one more variable called as underscore age inside the E1 object having the data as a is 30. And again, self.salary, third variable is also created, but it is an object specific variable. Yes, object specific variable. It means that here, firstly, when you are creating the E1 only, yes, when you are creating the E1 here in this first method, this is the E1. E1 is not having, E1 is having the two methods only. First is called as the set data, set underscore data, and the second function is called as a display. It is called as a display, but the E1 is not having any data. E1 is not having any data. Now E1 data will be created when you call the set data function. So when you are calling the set data function, yes, you have written self dot underscore name. So here one new variable is created. New variable is created having the name as underscore name and having the data as Ramesh. Having the data as Ramesh. Okay. Now second, self dot underscore age means new variable is created using the name as underscore age having the data as 30. And again, the third variable is created salary. Yes, having the data as 25,000. Yes, now E1 is modified here. E1 is modified here. Okay, so it is not the same. It is not the same as that of your C++ class and the Java class. In a C++ class or in a Java class, what we will do, we will create this the object specific data outside it, outside the class. Okay, if you remember, we are creating the class like this. Class, suppose employee, class employee. I think yes, I'm not remembering that syntax. And yes, like integer or string, string, string name, and then age is not age, integer age. Hope you remember this. And integer salary. This is not the syntax of Python, and this is not syntax of Python. And then after that, we'll write down that public void, and then set underscore data, and like that. Okay, so this type of the function declaration will generally do in a C++ or the C language. But the Python is having another type of the syntax. The Python is, it means that way if you create a variable outside the function, it is not related to the object, it is related to the class. It is a class related object, it is a class related data, and this data will be shared by all the all the objects. Like it is called the count equal to 0. Now this count variable
will be shared by all these objects E1, E2 and E3. There is only one copy of the count variable. But if you consider the self.name, there are 3 copies of the name. E1 name is different, E2 name is different, and E3 name is different. Yes, students, are you getting this? What is this? Is called as a class specific data, and yes, this is called as a object specific data. Object specific data. Yes, students, are you getting this? What is class specific data and the object specific data? अगर आपने देखो, अगर आपने उसको सेल्फ डॉट नहीं किया, लेकिन सेल्फ डॉट नहीं किया, इसके अंदर करते हो तो लोकल वेरिएबल हो जाएगा, लेकिन अगर बाहर करते हो तो इट इज कॉल्ड एज क्लास स्पेसिफिक डेटा एंड ओनली वन कॉपी ऑफ द काउंट विल बी क्रिएटेड. लेकिन यहाँ पे अगर इसके अंदर सेल्फ डॉट किया तो एवरी ऑब्जेक्ट इज हैविंग इट्स ओन कॉपी ऑफ नेम. तो हर एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग नाम होगा. यहाँ पे देखो, अगर काउंट मैंने यहाँ पे 1 कर दिया तो अगर E1 से अगर रीड करोगे तो क्या होगा? 1 ही मिलेगा. E2 से रीड करोगे तो 1 ही मिलेगा. E3 से रीड करोगे तो 1 ही मिलेगा. If the E3 has modified, E1, E2 also getting that modified value. Okay, so it is a shared variable. It is also called as a shared variable, and this is called as a specific variable. This is called as a specific variable. Okay, so yes, so this is the object specific and the class specific data. ये आगे चल के हमें देखना ही है. Okay, so yes, we have created the three objects here. So, and we have set the data first, and then after that, in a display function, when you call the display function, yes, we have printed that one, direct name, age, and the salary. But the function call should be, first you should call set data, then only you have to call display. If you call the display function first, then it will not work. Okay, पहले set data call करना पड़ेगा. set data call करने के बाद में पहले object create हो गए, this variable get created, then you can access it. अगर आपने पहले display call कर दिया तो क्या होगा? You are accessing it, but it is not exist. Exist नहीं है तो access कैसे करोगे? So yes, when you call it, when you create it, it will be created. ऐसे नहीं है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया मतलब उसके अंदर नेम, एज और सैलरी होगा ही, ऐसे नहीं है. व्हेन यू कॉल द सेट डेटा फंक्शन, देन ओनली इट विल बी गेट क्रिएटेड. ओके, तो देखते हैं हम यहाँ पे. नाउ E1 इज इक्वल टू एम्प्लॉय, first object get created, and then we have said the data as Ramesh, age is equal to 30 and salary is equal to 25,000. Yes, we can use the positional argument also. Yes, positional argument also work. Okay, and then we are calling the display function. Now let's see here, display is taking the self argument, but here while calling the display, I'm not giving any argument here, because what is self? Self is the who has called display. E1 has called display. So self is a pointer to E1. तो अगर ये self dot e name करो ना, self dot name करना है तो क्या मतलब क्या है? E1 का name, self dot age मतलब E1 का age, self dot salary मतलब E1 का salary. Are you getting this? तो देखो यहाँ पे मैंने 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, रमेश, महेश एंड चंदन. या सो लेट्स सी हियर, एवरी ऑब्जेक्ट इज हैविंग द सेपरेट इट्स इंडिविजुअल डेटा. एवरी ऑब्जेक्ट इज हैविंग द इट्स ओन डेटा. हर एक का खुद का डेटा है देखो, लेकिन कॉमन फंक्शन है. कॉमन, दे आर शेयरिंग द कॉमन फंक्शन, बट दे आर हैविंग द इट्स ओन सेपरेट डेटा. व्हाई सेपरेट? ओनली बिकॉज यू आर यूजिंग सेल्फ डॉट. If you are using self dot, then only you can create the object specific data. Yes, students, are you getting? How many of you are getting this? If you have already done the object programming before, it is very easy to you to understand. Yes, type got it in the chat box if you are getting this. How to create the class, how to create the object, and how to write down the function. Yes, Shiva has got it. Chetan also got it. Okay, let's create one class called as a student. Yes, I'm inserting the cell below, and let's create a class called as a student. Okay, so yes, class student. Okay, and yes,
what the student is having. The student is having, suppose, firstly, I have to write down the function to set the information of the student or set the data of the student. So that's why I'm writing one function called the set data function. Set data function which will set the data of the student. Yes. So yes, first should be self only. Every time you have to put the self. It is not mandatory to put the self. You whatever the name you have given. Yes. If you are given here the XYZ, then you should put here XYZ. You should put here XYZ. Okay, you should put here XYZ. Okay, not mandatory to have the word as a self, but actually it is a, yes, you are having the same output. Okay, so yes, but self will some having some more explanatory. That's why I will always put the first as a self. Self is called as a pointer. Self is self pointer. It is pointing to self, which is pointing to the self object. Okay, check data. Now what the student is having, the student is having the name. Okay, the yes, anyway, can you tell me what is this underscore? Why I have put underscore here? Why underscore? This underscore represent that I am making this name as a private. I want to limit the access of this name up to the class only. I want to make this name as up to the class only. Okay, I don't want to access this name outside the object. But actually you can still access, but it is only specific that any variable having the underscore in front of it, this variable you should not be accessed outside the class. This is the assumption in Python programming. ओके आपको बाहर नहीं एक्सेस कर सकते, बट यू कैन स्टिल एक्सेस. ऐसे नहीं है कि पाइथन बोलता है कि आपके ऊपर है, एक्सेस करना है करो, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि एक्सेस आप मत करो. देखो आप, अगर मैं कहता हूं e3._name, yes, we can access the its name outside the object also. Okay, तो सिर्फ पाइथन क्या करता है, पाइथन बोलता है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन मैं अलाउ करूंगा, आई एम अलाउइंग, बट you have to take care of it. Programmer has to take care of it. So the variable having the underscore in front of it, that variable is generally called as that variable is seems to be a private variable. Okay, तो ये वीक प्राइवेट बोलते हैं इसको, वीक प्राइवेट. और एक टाइप होता है स्ट्रॉन्ग प्राइवेट, और स्ट्रॉन्ग प्राइवेट हम आगे चल के देखेंगे. स्ट्रॉन्ग प्राइवेट होता है कि वो बाहर आप यूज ही नहीं कर सकते, यू कैन नॉट यूज इट आउटसाइड द क्लास, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग प्राइवेट. ये वीक प्राइवेट है. ओके, so let's take the data. Self name is the, okay, and yes, what roll number, yes, roll and the roll number. Okay, and yes, suppose marks. Okay, so these three data I'm taking. Yes, I want to create the object specific data, so yes, use the self dot. Now give the name or give the variable name. So yes, if it is object specific, use the underscore in front of it. So yes, underscore name is equal to name. Okay, so yes, we have created one object specific data. Second one is the, suppose, roll number, so it is equal to roll number. Okay, and then self dot underscore marks is equal to marks. Okay, so yes, done. Now let's print out its marks only. Okay, so yes, I'm writing one function called the print marks. It will print only marks. So self, and yes, I have to print out only marks. So yes, I'm using here marks of self dot underscore name is self dot marks. Okay, so its marks is printed with the name also. Okay, and yes, again I am using one function called as print underscore info, which will print the whole information like name and the roll number. So yes, print roll number comma self dot underscore roll
number. Okay, so yes, it should be underscore marks. Okay, and yes, let's print the name also. So yes, name comma self dot underscore name. Okay, so yes, now the class student I have written, which is having the three functions: set data, print marks, and the print function. So let's create the student first. First student I'm creating as a S1. So S1 is equal to, just follow this syntax, like you should have the one tab in front of it. Okay, so this definition, these three statements should be present in definition, so that's why two tabs should be present in front of this self. Okay, so this calls the indentation because this is a block of the set data, this is a statement of the print marks, and this is a statement of the print info. Okay, so now create the student. Actually the class first letter should be capital, so a student, student. Okay, and then let's set the data first. So set underscore data. So yes, set the data. The first I'm setting the data as Ganesh, and roll number is suppose 1, and the marks is suppose 98 point. Okay, so whatever the marks, you can, if you can put the float also, you can put the integer also. Okay, and then yes, one dot, yes, I'm printing the information only. Yes, you can print the marks also. S1 dot set underscore, or not set, print underscore mark. It should be print underscore info, print underscore marks. Okay, so let's print it. So yes, I have created one object having the name as Ganesh, roll number 1, and the marks is 98.56. Yeah, so yes, I'm getting my output. So first is info function you have called. In an info function, you have printed the roll number and name. Yes, it is printed. And yes, in the next you have printed the marks. So yes, marks of Ganesh is 98.56. Getting that? So same, you can have the second object also. You can create the second object also, like S2, S2 and S2. And yes, suppose the different name, Nilesh, and suppose 2, and yes, this is 90.50. Let's see here the first information, S1, and this is the S2. Yes, students, are you getting this? Chetan, Shiva, Aditya, are you getting how to create the object, how to write down the class, how to write down the function? Okay, remember here your first argument should be self. And what is self? Self is the self pointer. It's called a self-referential pointer. Okay, now like the constructor present in the Java and the C++, we can also write down the constructor and destructor of the class. Now, what is constructor? A constructor is a special function which is used for the object initialization. Yes, constructor is just called after the creation of the object. So when the object having the memory allocated, after allocating the memory, the compiler will call the constructor to initialization. So yes, whatever the initialization of your object, all initialization you put, generally you put into the constructor. So generally in a C++ and Python, constructor is the same, having the same name as that of your class name. But in Python, the constructor for a class, any class, you can consider any class, the constructor of every class having the same name as a underscore init underscore. So this is called as a constructor. Okay, you can call here as a constructor. So this is a constructor of the class employee. It is present in employee, so that's why it is a constructor of employee class. So how to write down? Very simple definition. So it is a function, so that's why definition, and write down 2 underscore, and then init is called the initialization, and then 2 underscore. Okay, so this is a default, the built-in function. You are overriding it. So yes, underscore init. And now self means yes, what is the object? Which object I have to initialize? Yes, it will be pointed by self. Self is a pointer which is pointing to the object. And now next one is
what are the value I have to initialize. Okay, so here we have you given the default value also. If the user is not giving that value, then the default value is given here. N is equal to empty, A is equal to 0, and S is equal to 0.0. Okay, or simply you can give here not given. Okay, so name is not given. Okay, age is 0 and 0.0. Okay, so if the user is not giving this name, age, and the salary, then by default this value has to be initialized. N is not given, age 0, and S is 0. So yes, we have seen these default values in a previous lectures, in a previous session, how to use the default values in a function. Okay, so yes, you can call the yes, how to call the init function, it will be automatically called. We know that while creation of the object, the constructor will be automatically called. Constructor will be automatically called just after allocating the memory. Okay, so else self dot underscore name equal to n. Yes, the name n, whatever the value of n will be assigned to name, then age, and then salary. Okay, and then the same functions we have written here, set data and the display function, very same function. Now next one is the delete function. Yes, actually I will be explaining this delete afterwards. I am commenting this. So consider that this employee is only having the constructor. You can, it is not compulsory to write down the destructor for every class. Okay, destructor will be called just before deletion of the object, just before deletion. Okay. Okay, so not compulsory to write down destructor. Also not compulsory to write down the constructor also. Here also we have created the class, but we have not written the constructor or destructor. So yes, constructor, destructor, not compulsory, but you can write down. So whenever the object get created, you have these three values, name, age, and the salary. Yes, after that you can now set data, or you can directly call the display function. Okay, let's see here. Without set data, if you call print info, let's see what happened. Without set data, here I have commented the set data. Let's see here, there is a student object is not having the attribute roll number. Getting this? So it means that when you using the print info, the roll number is missing. Why roll number is missing? Because it is not created. ओके, क्रिएट ही नहीं हुआ तो उसको एक्सेस कैसे करोगे? तो क्रिएट कौन कर रहा है? सेट डेटा कॉल कर रहा है. सेट डेटा इज क्रिएटिंग, सो यू आर नॉट कॉल इट. तो अगर कॉल करोगे तो ही होगा. देखो, तो S1 का आउटपुट आ गया. देखो S1 का आउटपुट आ गया, लेकिन S2 का नहीं आया. क्यों नहीं आया S2 का? बिकॉज S2 सेट डेटा आई हैव नॉट कॉल्ड. यहाँ पे S2 में प्रॉब्लम आ गया. स्टूडेंट ऑब्जेक्ट नॉट हैविंग द एट्रीब्यूट रोल अंडरस्कोर नंबर. गेटिंग दैट? तो इसके लिए कंपलसरी हो जाता है कि अगर आपको कोई भी अगर क्लास क्रिएट करना है और ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक अगर डेटा अगर आपको करना है, सो यस, बिफोर calling the set data function, make sure that in init function you have initialized it. बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज कर दो, 0 से इनिशियलाइज कर दो. ओके, तो देखो कैसे होगा. So yes, you are calling E1 equal to employee. So yes, employee means you are not given any value here. Name is also not given, age is also not given, S is also not given. तो देखो, N भी नहीं दिया, A भी नहीं दिया, S भी नहीं दिया, तो क्या होगा? By default value will be considered. तो अगर मैं E1 डॉट डिस्प्ले करूंगा, E1 डॉट डिस्प्ले, तो क्या होगा? नेम होगा not given, एज होगा 0, और सैलरी होगा 0.0. गेटिंग? सैलरी होगा 0.0. ओके, लेकिन वही अगर मैंने E2 कॉल किया, E2 में मैंने क्या किया? E2 में मैंने सिर्फ नेम दिया और एज दिया. सैलरी इज नॉट गिवन, सैलरी नहीं दिया. तो E2 का क्या होगा? E2 का नेम होगा महेश, E2 का एज होगा 45, बट द सैलरी इज 0.0. गेटिंग? लेकिन E3 क्रिएट किया, उसमें तीनों की तीनों वैल्यू दे दी. तो देखो, E3 का अगर मैं डिस्प्ले फंक्शन कॉल करूंगा, तो क्या होगा? लेकिन ये देखो, E3 मैंने कैसे क्रिएट किया है? फर्स्ट आई हैव क्रिएटेड E3 विद 0 वैल्यूज, डिफॉल्ट वैल्यूज किया, उसके बाद में सेट डेटा फंक्शन कॉल किया. आई हैव मॉडिफाइड दैट वैल्यू, एंड लेट्स चेक व्हाट इज द वैल्यू. द वैल्यू इज सेम, चंदन 26 and 30,000. यस, यू कैन यूज इट. तो देखो यहाँ पे E1 डॉट डिस्प्ले किया तो नॉट गिवन 0 and 0.0. नेक्स्ट इज
E2 डॉट डिस्प्ले आएगा आपका महेश 45 एंड 0.0 और E3 आएगा आपका चंदन 26 एंड 30,000. Yes, students, are you getting this constructor? How to write down the constructor? Okay, type yes in the chat box if you are getting how to write down the constructor. Let's write the constructor for the student class. Student class का constructor add करेंगे हम यहाँ पे. तो कैसे करेंगे? पहले simple definition underscore init underscore. Okay, और यहाँ पे हम देंगे self. और क्या क्या है अभी? It contains the name, so ये name. It contains a roll number, so yes, roll number and the marks. Okay, you can give the default value also. Like if it is not given, it is considered as this 0. Okay, yes, just create the object specific variable like self dot name is equal to name, then self dot underscore roll number is equal to roll number, and self dot marks underscore marks is equal to marks. ओके, तो बस ये मैंने स्टेटमेंट ऐड कर दिया. तो देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ और ये भी कमेंट किया. लास्ट टाइम यहाँ पे एरर आया था. ओके, लास्ट टाइम एरर आया था. देखो लास्ट टाइम एरर आया था. सो लेट मी रन दिस एंड यस यू कैन सी हियर roll number 0, name, marks is this. Okay, marks of this is this. मतलब यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो गया? ब्लैंक स्पेस आ गया. marks of this is 0. Okay, so if it is not given or otherwise आप सेट करते हो, तो अगर आप सेट करोगे तो S1 का डेटा सेट किया, S2 का डेटा सेट नहीं किया, तो देखो यहाँ पे S1 का डेटा जो भी था वो आ गया, लेकिन S2 का नहीं आया. Why S2 का नहीं आया? लेकिन एरर भी नहीं आया. वी आर नॉट गेटिंग एनी एरर. लास्ट टाइम में एरर आया था. व्हेन यू आर नॉट राइटिंग द कंस्ट्रक्टर वी आर गेटिंग द एरर. बट हियर इफ यू आर नॉट calling the set data, then also it is having that method self underscore roll number, name and the marks. Yes, students, are you getting this? What is the advantage of writing the constructor? What is the advantage of writing the constructor? Because the object get initialized at the time of the creation of the object. Okay, तो देखो हम डिस्ट्रक्टर भी ऐड करेंगे. डिस्ट्रक्टर, now how to call the destructor, how to write down the destructor. The destructor can be written by simply by writing the underscore delete underscore del. Del करना है आपको underscore del underscore and it is destructor is not taking any argument. हाँ, very compulsory. देखो a constructor will taking the number of argument या simply self भी ले सकता है. It can take the 0 to number of argument, but destructor is not taking any argument. Destructor is taking only one argument called as a self. ओके, सेल्फ ही उसको देता है. मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्ट करना है, तो ये आपको यहाँ पे कर सकते हो सेल्फ. तो जब भी ये डिस्ट्रक्टर कॉल होगा तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिलीटेड. और कौन सा ऑब्जेक्ट डिलीट हुआ? ओके, str ऑफ सेल्फ मतलब इसका एड्रेस, सेल्फ मतलब इसका एड्रेस, ऑब्जेक्ट का एड्रेस प्रिंट हो जाएगा. उसके बाद में उसका नाम भी प्रिंट हो जाएगा. ओके, सो नेम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट and the address of the object is also deleted. Okay, so let's see here. Okay, I'm giving the name also. I'm giving the name. Okay, name पता होना चाहिए मुझे. तो नेम है, देखो पहले एम्प्लॉय का ये महेश, दूसरे का गणेश, देन महेश एंड देन चंदन. तो पहले मैंने कॉल कर रहा हूँ, तो देखो आउटपुट तो कुछ नहीं आया. देयर इज नो आउटपुट. Why there is no output? Because here the object is not deleted. The object is not deleted. Object is deleted अभी when you rerun that program, जब आप रीरन करोगे ना, तो पहले वाले, अभी ये जो ऑब्जेक्ट डिलीटेड आया ना, तो पहला वाला E1 डिलीट हुआ. देखो E1, पहला जो E1 था उसका नाम क्या था? गणेश. पहला E2 उसका नाम क्या था? महेश. पहला E3 इसका नाम क्या था? चंदन. गेटिंग दैट? अभी तो आप अगर इसको चेंज करोगे, अभी देखो अभी क्या है, अभी गणेश, महेश और चंदन. अभी E1 इज पॉइंटिंग टू गणेश, E2 महेश एंड E3 चंदन. अगर आपने यहाँ पे मैंने 1 1 दे रहा हूँ, so new data, new object will be having
द डेटा एज अ गणेश 1, महेश 1 एंड चंदन 1। लेकिन अगर मैं फिर से रन करूंगा तो ये अभी के जो E1, E2, E3 है ना वो डिलीट होंगे। तो देखो ये प्रीवियस ऑब्जेक्ट गेट डिलीटेड। प्रीवियस ऑब्जेक्ट का नाम क्या था? गणेश। लेकिन अभी जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम क्या है? गणेश 1। प्रीवियस ऑब्जेक्ट का नाम क्या था? महेश। लेकिन अभी के ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? महेश 1। प्रीवियस ऑब्जेक्ट का नाम क्या था? चंदन। अभी के ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? चंदन 1। Are you getting that? So yes, it will be deleted when the E1 is assigned to another object. पहले देखो E1 is pointing to that particular object. E1 जब तक उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है ना उसको कोई डिलीट नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही E1 आपने दूसरे ऑब्जेक्ट को असाइन किया तो क्या हुआ? फर्स्ट ऑब्जेक्ट तो गया मतलब क्या? उसका डिलीट फंक्शन कॉल हुआ, इसका डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ। तो देखो डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो जो भी डिस्ट्रक्टर में आपने लिखा है ना, इट इज एज इट इज प्रिंटेड। ऑब्जेक्ट डिलीटेड स्ट्रिंग, दैट इज ऑब्जेक्ट एड्रेस एंड द सेल्फ डॉट नेम, द सेल्फ डॉट नेम गणेश। Yes students, are you getting this? How to write down the destructor? और destructor कब कॉल होता है? Destructor will be called when the object is not having any reference. You can write down this. If the object is not having any reference, then only the object destructor will be called. And who called the destructor? The garbage collector will call destructor. Who called? Garbage collector. The garbage collector will call the destructor. Getting that? Okay. Now next one is class variable and methods. Yes, a class related variable, how we can create? अभी तक हमने जो भी किया that is called as a object related, object specific variables. This name, age, salary, these are the object specific. Every object is having its own copy. लेकिन कैन आई क्रिएट वन वेरिएबल विच इज शेयर्ड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट? ऐसा कोई वेरिएबल में क्रिएट कर सकता हूँ क्या कि वो वेरिएबल शेयर्ड वेरिएबल होगा? मतलब E1, E2, E3 कितने भी ऑब्जेक्ट में यूज करो, कितने भी ऑब्जेक्ट करो, वो जो वेरिएबल होगा दैट वेरिएबल विल बी शेयर्ड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट। कॉमन वेरिएबल बोल सकते हो आप, कॉमन वेरिएबल, सार्वजनिक, की ज्याला कोणी ऍक्सेस करू शकतो। यस, एनीवन कैन ऍक्सेस। सो दिस काउंट वेरिएबल आई हैव क्रिएटेड आउटसाइड द फंक्शन and it is not having self. यहाँ पे self नहीं है, देखो self ऐसे कुछ नहीं लिखा। count equal to 0, so it is called the class variable. Class variable. तो मैंने क्या किया? Whenever a init function will be called, the count will be incremented by 1. And how to access the class variable? Just see here. देखो अगर object specific variable access करना है तो क्या करेंगे हम? self dot करेंगे, self dot. But if you want to access the class specific variable, then you have to use class name dot variable name. Class name dot variable name. Are you getting this? Yes. कैसे करना है? अगर ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक है तो सेल्फ डॉट, क्लास स्पेसिफिक है तो क्लास डॉट employee dot count equal to employee dot count plus 1. So whatever the previous value get incremented by 1. नया वैल्यू तो जितने init फंक्शन कॉल हो गए उतने टाइम काउंट वेरिएबल इंक्रीमेंट हो जाएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे देखो init फंक्शन कॉल किया, सेट डेटा और डिस्प्ले सेम ही, पूरा का पूरा सेम ही है, सिर्फ एक ही मॉडिफिकेशन की है। ओके, तो देखते हैं अभी E1 पहले क्रिएट हुआ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे E1 क्रिएट हुआ तो काउंट वेरिएबल क्या हुआ? हियर द काउंट इज इक्वल टू 1. काउंट कितना है? काउंट इज इक्वल टू 1. ओके, E2 किया तो काउंट कितना हो जाएगा? काउंट इज इक्वल टू, व्हाट इज काउंट वेरिएबल? काउंट वेरिएबल becomes 2. When you are creating E3, so what is count variable? Count variable becomes 3. When you are creating the E4, the count variable becomes 4. When you are creating the E5, init function will be called, और init function जब कॉल होता है तो क्या होता है? Count will be incremented by 1. So count variable becomes 5. So let's see the, okay, ये मेरा assumption हो गया. Let's see what is the output. You see here total object, ये फिर से रन करना पड़ेगा। Okay, तो total object created equal to 5. Total object created equal to 5. Yes students, are you getting this? जितने भी ऑब्जेक्ट, कितने ऑब्जेक्ट है अभी, करंट कितने हैं, उस क्लास के कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट है, अगर ये आपको अगर
फाइंड आउट करना है, सो यू कैन यूज दिस मेथड. So but this has to be written in the constructor only. Yes students, are you getting? Now this class variable is just like, you can consider that, ये देखो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं क्लास रिलेट ऑब्जेक्ट रिलेटेड अगर मैं बोलूँ ऑब्जेक्ट रिलेटेड, तो ये देखो ये हो गया E1, ये हो गया E2, ये हो गया E3. तो E1 का जो भी डेटा होगा वो इसमें होगा, E2 का जो भी डेटा हो इसमें होगा, E3 का जो भी डेटा होगा वो इसमें होगा. मतलब इसका खुद का नेम होगा, इसका खुद का नेम होगा, इसका खुद का नेम होगा, इसका खुद का एज, सैलरी, करेक्ट, खुद का होगा. मतलब इसका इसमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होगा. बट देयर इज वन काउंट वेरिएबल, देयर इज वन काउंट वेरिएबल. दिस इज द काउंट वेरिएबल. This is a count variable shared by all these objects, shared by all these objects. By default कितना है 0, by default कितना है 0. So when the E1 is created, पहले E1 create हुआ, तो E1 create हुआ तो उसका constructor call हुआ. In that constructor you have incremented that value. तो ये count 0 की जगह क्या हो गया, E1 हो गया. You created the E2, count कितना हो गया, 1 की जगह हो गया 2. You created E3, 2 की जगह हो गया 3. So yes. And when you are calling the count function, or when you are accessing the count function, what is the latest value? The latest value is now 3. Latest value is now 3. Now you can consider this count variable as a shared variable. एक ऐसा variable है कि that is common to all the objects. That is common to all objects. तो अगर आपको ऐसा कुछ करना है कि object जो होगा, object होगा और नहीं क्लास होगा, क्लास में क्लास रिलेटेड अगर कुछ आपको डेटा चाहिए, क्लास रिलेटेड, ऑब्जेक्ट का उसका खुद का डेटा होगा, लेकिन क्लास रिलेटेड कुछ का कॉमन होगा, कॉमन डेटा विच विल शेयर्ड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट. जैसे कि देखो कॉलेज होता है, देखो कॉलेज, इन द कॉलेज देयर आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक प्रोफेसर, डिफरेंट प्रोफेसर्स आर देयर, डिफरेंट स्टूडेंट्स आर देयर. बट हाउ मेनी लाइब्रेरीज आर देयर, कितने लाइब्रेरीज होते हैं? यस, हाउ मेनी लाइब्रेरीज? ओनली वन लाइब्रेरीज. Okay, कितने ऑफिस होते हैं? Only one account office. So that is called as a college specific. कॉलेज स्पेसिफिक है. डिपार्टमेंट का होता है क्या, वो इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट, कंप्यूटर डिपार्टमेंट का अलग अलग लाइब्रेरी नहीं होगा. There is a library of college. There is a common library. So all the common facility is related to the class. It is related to the class. Yes, Aditya, are you getting this? जो common होगा, that common is you are associated with the class. And if you want to make it as an object specific, create by using the self. Now it is very similar like the static variable in C++ और Java. अगर आपने C++ Java अच्छी तरह किया है, अगर आपका C++ Java अच्छा है, तो ये जो वेरिएबल हमने यूज किया, in a Java language, we create that variable, we make that variable as a static variable. If you create a class variable as a static variable, then that variable is called as a shared variable. उसको हम क्या बोलते हैं? Shared variable. C++ में वैसे ही है. In a C++, when you create a class variable as a static variable, it is not object specific, it is a class specific. It is a class specific. Yes? कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता था? So how many of you know that concept, a class specific data and the object specific data? Type me in the chat box or not me in the chat box. जिनको पता था type me in the chat box. If you don't know, just type not me in the chat box. Class specific and object specific. Actually आपका बैच ही कोरोना का बैच है, तो I don't think that this इतना rigorous teaching हुआ होगा आपका. ये थोड़ा डिटेल में होता है. Yes, Akash knows. Okay. तो याद रखो, ऐसे भी कुछ होता है कि अगर ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक अगर देना है तो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक भी दे सकते हो, या अदरवाइज एवरीथिंग यू हैव टू मेक इट एज अ क्लास. नहीं, क्लास स्पेसिफिक करना है तो क्लास स्पेसिफिक कर सकते हो, अदरवाइज यू हैव टू मेक इट ऑल एज अ ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक.
ओके, ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक मतलब सेल्फ डॉट जो होता है ना ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। जैसे कि ये देखो फ्रूट ऑब्जेक्ट, फ्रूट क्लास क्रिएट किया है हैविंग द name as a banana, size as a 5 and the color as a yellow. Okay, so f1 is created, but here the count is also there, count variable, it is called as a class variable. कितने fruit create किए, कितने object create किए, that will be incremented every time when the constructor will be called. So let's see here, display count एक function ही बना दिया है display count, and in that function we have called the fruit dot count. फ्रूट डॉट काउंट, यहाँ पे मैंने सेल्फ डॉट काउंट नहीं किया, क्या गया फ्रूट डॉट काउंट, कौन सा काउंट करना है, फ्रूट का काउंट करना है। यस, सो हाउ मेनी ऑब्जेक्ट क्रिएटेड 3, यहाँ पे 3 आ गया। आर यू गेटिंग दिस? सो हियर द काउंट इज अ क्लास एट्रीब्यूट, नॉट ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट, सो इट इज शेयर्ड अमॉन्ग्स्ट ऑल द फ्रूट ऑब्जेक्ट्स। इट कैन बी इनिशियलाइज्ड एज अ काउंट इक्वल टू 0 बट कैन बी एक्सेस यूजिंग द फ्रूट डॉट काउंट। उसको एक्सेस करना जरूर, इसको इनिशियलाइज करना जरूरी है, अगर ये इनिशियलाइज नहीं करते तो देखो क्या होता है, if you are not initialized it is giving the error. Okay, it is giving the error, count is not defined. Okay, तो इसको इनिशियलाइज करना होगा, तो इनिशियलाइज मतलब 0 से इनिशियलाइज करो, 2 से इनिशियलाइज करो, किससे भी इनिशियलाइज कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया 3। ओके, ये देखो सेम हमने जो ऊपर किया था सेम ही यहाँ पे init function has been called here. Yes students, are you getting class and objects? So this is the end of this point, class and the objects. Okay, let's see the next one as a containership and the inheritance. Yes, we will complete this today only because it is Thursday और Friday तक हमें ये पूरा complete करना है। तो कॉन्सेप्ट एकदम इजी है, देखो reuse mechanism is generally, for reuse mechanism we generally use this containership and the inheritance. Okay, so yes, we'll first see what do you mean by containership. So what is containership? Containership should be used when the two classes has a relationship. क्या कौन सा रिलेशनशिप होना चाहिए? has a relationship, like college has a professor, college has a professor, मतलब कॉलेज के अंदर प्रोफेसर है, कॉलेज के अंदर प्रोफेसर है। सो व्हेन यू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, व्हेन यू क्रिएट द क्लास ऑफ कॉलेज, इट कंटेन्स द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोफेसर, सो इट इज कॉल्ड एज अ containership. So professor is present in college or the college contains the professor, that's what this relationship is called as a containership. उसको हम क्या बोलेंगे? Containership. College has a professor, employee has a department, college has a student, college has a student. Getting that? College has a student. Getting? जब भी अब has a कीवर्ड हम यूज करेंगे ना, तो हमें कौन सा यूज करना है मैकेनिज्म? कंटेनरशिप हमें यूज करना है। अभी कंटेनरशिप क्या होता है? अभी कंटेनरशिप में क्या होता है कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन दिस। जैसे डिपार्टमेंट एक पूरा जो क्लास है वो अलग है, एम्प्लॉय क्लास अलग है, एम्प्लॉय क्लास अलग है, डिपार्टमेंट क्लास अलग है। ओके, तो पहले डिपार्टमेंट देखो, डिपार्टमेंट हैज अ एम्प्लॉय, ये चाहता है डिपार्टमेंट हैज अ एम्प्लॉय। ओके, डिपार्टमेंट हैज अ एम्प्लॉय, नहीं, employee has a department, not a department has an employee. No, it is not same as the inheritance is different. Inheritance is different. इसमें is a होता है, is a relationship. Inheritance क्या होता है? Inheritance में जैसे कि sparrow is a bird. Okay, जैसे कि होता है कि चेतन is a student, Chaitali is a student, Aditya is a student. So when there is a relationship, then we are using inheritance. And when there is a has a relationship, we are using the containership. Yes, Kumar, are you getting this? Inheritance आगे चल के हम देखना ही inheritance कैसे होता है। Okay, देखो यहाँ पे रिलेशनशिप क्या है? Employee has a department, तो पहले डिपार्टमेंट क्रिएट कर लो। तो डिपार्टमेंट हमने किया क्लास डिपार्टमेंट, उसमें सेट डिपार्टमेंट किया, मैंने यूजर से ही पूछा इंटर द डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम। ओके, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम सेव कर दिया। ओके, देन आफ्टर दैट डिस्प्ले डिपार्टमेंट अगर मैं करूंगा तो क्या आ जाएगा? डिपार्टमेंट आईडी एंड द डिपार्टमेंट नेम, इट विल बी गेट क्रिएटेड, बट देयर इज नो रिलेशनशिप ऑफ दिस एम्प्लॉय, सो यू कैन यूज दिस डिपार्टमेंट। जैसे कि एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट हो सकता है, वैसे दूसरे का भी हो सकता है, जैसे कि एक लेबर है, लेबर का भी डिपार्टमेंट हो सकता है। सो दिस डिपार्टमेंट क्लास कैन बी रीयूज
दिस डिपार्टमेंट कैन बी रीयूज इन अ डिफरेंट सिनेरियो। लाइक अगर कॉलेज में है तो हम बोलेंगे कि प्रोफेसर हैज अ डिपार्टमेंट, अगर कंपनी में है तो एम्प्लॉय हैज अ डिपार्टमेंट। ओके, लेकिन सेम डिपार्टमेंट क्लास हम यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे कि हम कुछ अगर लेबर में है तो हम बोलेंगे कि द लेबर हैज अ डिपार्टमेंट। गेटिंग दैट? सो दिस डिपार्टमेंट क्लास कैन बी रीयूज्ड देयर। ओके, तो ये देखो हम एम्प्लॉय क्लास हम यूज करेंगे, एम्प्लॉय क्लास। तो एम्प्लॉय क्लास में क्या हम करेंगे, पहले हम करेंगे इंक्लूड करेंगे कि एंटर द एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी यूजर से लिया, उसके बाद में हमने किया एम्प्लॉय नेम यूजर से लिया, उसके बाद में नाउ वी आर employee having the department, so that's why we are creating one variable called as a department, and yes we are creating the object of the department class. now जैसे ही देखो object of the department class has been created. ओके, तो हमने क्या किया, ये ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो गया, अभी सेट डिपार्टमेंट करना है तो सेट डिपार्टमेंट हम कर सकते हैं। अदरवाइज व्हाट वी कैन डू, वी कैन राइट डाउन द इनिट फंक्शन। इंस्टेड ऑफ दैट आई कैन राइट डाउन इनिट फंक्शन, थोड़ा मॉडिफाई कर लेता हूं मैं। सो और ये पूरा मैं इसमें डाल दूंगा, सेट डिपार्टमेंट में हटा दूंगा। ओके, तो व्हेनेवर ये नहीं लगेगा, फिर एक ही इसमें काम हो जाएगा। ओके, तो देखो दिस एम्प्लॉय इज हैविंग द एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय इज हैविंग द एम्प्लॉय नेम, एंड द एम्प्लॉय इज हैविंग द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट मतलब क्या है कि वेन यू आर कॉलिंग डिपार्टमेंट, यू आर क्रिएटिंग द डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट। जैसे डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो ये पूछेगा डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम पूछेगा। ओके, तो पहले पूछेगा एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, उसके बाद में डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम ये पूछेगा। देन आफ्टर दैट जब भी आप ये सेट एम्प्लॉय अगर आप करोगे तो भी ये होगा, और अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, अगेन वी कैन राइट डाउन द इनिट फंक्शन फॉर दी। मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। ओके, सो दिस द एग्जांपल, ये मैंने लास्ट में दिया था, ये इसको थोड़ा सा हम इसमें ही लग देंगे, तो ये सेट एम्प्लॉय का भी करने का कोई जरूरत नहीं है फिर। ओके, यस, तो उसका कंस्ट्रक्टर ही हमने लिख दिया, डिपार्टमेंट का कंस्ट्रक्टर और ये एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर। ओके, तो चलो हो गया मेरा। उसके बाद में मैंने जब भी मैं डिस्प्ले एम्प्लॉय करूंगा तो क्या होगा, एम्प्लॉय इन्फो ऐसे प्रिंट होगा, एंड देन एम्प्लॉय आईडी प्रिंट होगा, एम्प्लॉय नेम प्रिंट होगा। तो देखो एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम तो डायरेक्ट में एक्सेस कर सकता हूँ, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर एम्प्लॉय आईडी, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर ई नेम। बट कैन आई एक्सेस दिस आईडी एंड नेम, कैन आई एक्सेस द डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम इनसाइड दिस employee? No, we cannot access because it is private to this object, private to this object. ये ऑब्जेक्ट का प्राइवेट है, क्लास का प्राइवेट है, तो ये क्लास का प्राइवेट है तो इसके अंदर नहीं यूज कर सकते। तो इस यूज नहीं कर सकते तो क्या कॉल करेंगे, हमें इसको प्रिंट तो करना है। सो यस वी हैव द मेथड, हमें इसका मेथड है देखो डिस्प्ले डिपार्टमेंट। यस वी आर कॉलिंग द डिस्प्ले डिपार्टमेंट मेथड। ये तो पब्लिक है, देखो इट्स अ पब्लिक मेथड, तो पब्लिक मेथड है तो ये हम इसको कॉल कर सकते हैं। वी कैन कॉल दिस मेथड आल्सो। Yes, let's see by running this program. कहाँ पे error है, display underscore where is 1921 even equal to employee init. Okay, yes, we have to give the self, यहाँ पे हमने self नहीं दिया इसलिए प्रॉब्लम है। ओके, तो यस एम्प्लॉय आईडी देखो, एम्प्लॉय आईडी मैंने 1 कर दिया। ओके, नेम दे दिया मैंने गणेश। ओके, डिपार्टमेंट पूछ रहा है, अभी देखो पहले उसने एम्प्लॉय आईडी पूछा, एम्प्लॉय नेम पूछा, देन इट इज आस्किंग फॉर। नाउ ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, एंड इन व्हाइल क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इट विल आस्क द आईडी। अभी डिपार्टमेंट का आईडी हम करेंगे, फॉर एग्जांपल उसका है सपोज डी डेव1 इस तरीके से, और डिपार्टमेंट का नाम है सपोज डेवलपमेंट। ओके, तो देखो एम्प्लॉय इन्फो प्रिंट किया मैंने, e1 डॉट एम्प्लॉय डिस्प्ले इन्फो, डिस्प्ले एम्प्लॉय, एंड देन एम्प्लॉय आईडी इज 1, एम्प्लॉय नेम इज गणेश, and employee department ID is dev1 and the department name is development. Yes, is the self necessary? Yes, self is necessary. आपने अभी देखा मैंने self नहीं दिया था तो क्या आया, error आया। Why error? Because the init function takes the one argument. Init function takes the one argument, and what is that argument? The argument is the address of the object. Address of object. Self is the pointer to the object. Self is the pointer to the E1 object. Okay, अगर मैं E2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो self is the pointer to the E2 ऑब्जेक्ट। okay, कौन सा ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है, init फंक्शन ये डिफाइन करता है self. Yes, Kumar, are you getting this?
ओके, तो अभी ये तो कंटेनरशिप हो गया। कंटेनरशिप में हम क्या करते हैं कि देर इज नो सच अ रिलेशनशिप बिटवीन दिस डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय। रिलेशनशिप कैसा है आप बोल सकते हो कि ऐसा बाहर बाहर का डिपार्टमेंटशिप रिलेशनशिप है, मतलब एम्प्लॉय हैज अ डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय हैज अ डिपार्टमेंट, हैज अ रिलेशनशिप है। ओके, लेकिन in our real life also there are such a relationship having called as a is a relationship, is a relationship। वो is a relationship कैसे होता है, जैसे कि सेविंग अकाउंट इज अ अकाउंट, यस सेविंग अकाउंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट इज अकाउंट, सेविंग अकाउंट हैज अकाउंट नहीं बोल सकते, सेविंग अकाउंट इज अ अकाउंट, यस। सो दैट्स टाइप ऑफ द रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज अ इनहेरिटर्स, इनहेरिटर्स। तो क्या होता है इसमें, देयर इज अ वन सुपर क्लास इज देयर और आल्सो कॉल्ड एज अ बेस क्लास एंड देयर इज अ डिराइव क्लास इज देयर। सुपर क्लास और बेस क्लास एंड डिराइव क्लास, बेस क्लास डिराइव क्लास, एंड दिस डिराइव क्लास इज डिराइव फ्रॉम द बेस क्लास। तो ये सेविंग अकाउंट अगर आपको बनाना है तो अकाउंट होना जरूरी है, देयर इज कंपलसरी, कंपलसरी है। मतलब सेविंग अकाउंट बनाने के लिए हम अकाउंट क्लास यूज करेंगे। whatever the values or whatever the methods we have declared in account class, that is ready-madely we can use in a saving account। तो बाद में मतलब फिर से वो लिखने की कोई जरूरत नहीं होता। all these things you have written inside the account class will be automatically inherited into the saving account। सिर्फ आपको क्या देना है, नया कुछ देना है। ये सेविंग अकाउंट में क्या होगा, अकाउंट का टाइप, टाइप ऑफ अकाउंट, ये अलग जो भी नए मेथड आपको एक्सेस करने हैं या लिखने हैं वो आपको कर सकते हो। जनरली व्हाई वी राइट डाउन द डिराइव क्लास टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग क्लास। व्हाई वी राइट डाउन द डिराइव क्लास, मतलब नया क्लास हम क्यों लिखते हैं, जनरली चाइल्ड क्लास कब क्यों लिखते हैं, बिकॉज देयर आर सम डिफिशियंसी इनटू द बेस क्लास। कोई डिफिशियंसी है उसमें, वो प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो मैं सुपर क्लास में क्यों मॉडिफाई करूं। सुपर क्लास में मॉडिफाई करिए किया तो क्या होगा, इट विल अफेक्ट माय होल प्रोग्राम, इट विल अफेक्ट माय होल प्रोजेक्ट। so instead of that what I can do, I can write my derive class, new derive class which will derive from the base class। बेस क्लास से जो डिराइव किया हुआ एक नया मैं डिराइव क्लास यूज करूंगा। ओके, सो इन इनहेरिटर द न्यू क्लास कॉल्ड एज अ डिराइव क्लास can be created to inherit the feature of an existing class called as a base class, called as a base class। base class is also called as super class, also called as a parent class। उसको हम parent class बोल सकते हैं, super class बोल सकते हैं, derived class को हम बोल सकते हैं सब class और the child class। getting that? तो देखो कैसे यूज करते हैं जनरली दिस, आई थिंक यू हैव ऑलरेडी सीन इन द C++ और जावा, आपने देखा ही होगा कि कैसे होता है इनहेरिटर। तो yes, class index देखा ना, index class has been given and here one constructor is written here, underscore underscore init, having the two variable called as a underscore var and the underscore count। अभी देखो ये हमने अभी तक हमने सिर्फ underscore count ही यूज किया है। This underscore count is called as a weak, it is called as a weak private variable, weak private variable। Also the second name of it is a protected variable, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टेड वेरिएबल। तो प्रोटेक्टेड वेरिएबल कैन बी एक्सेस, प्रोटेक्टेड वेरिएबल कैन बी एक्सेस आउटसाइड द क्लास आल्सो, मतलब यूजिंग द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यूज करके एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसको स्ट्रिक्टली प्राइवेट बना दिया तो यू कैन नॉट एक्सेस, स्ट्रिक्टली प्राइवेट बना दिया ना तो यू कैन नॉट एक्सेस। आप को अगर एग्जाम्पल दिखाना है तो मैं दिखा सकता हूँ। यस, वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड दैट क्लास। I think where is that? स्टूडेंट क्लास कहाँ पे है, स्टूडेंट क्लास, यस ये स्टूडेंट क्लास है। देखो यहाँ पे मैंने अगर अंडरस्कोर ये अंडरस्कोर नेम दिया है, अभी ये रन करके देखते हैं। सो इट इज परफेक्टली वैलिड, ये हटा देता हूँ मैं, इट इज परफेक्टली वैलिड। सो कैन आई एक्सेस नेम, कैन आई एक्सेस नेम, yes1 डॉट अंडरस्कोर नेम, कैन आई एक्सेस नेम, यस यू कैन एक्सेस, आप एक्सेस कर सकते हो। ये मैंने देखो ये मैं हटा दे रहा हूँ, तो सिर्फ नेम एक्सेस करना है, कर सकता हूँ। कैन आई एक्सेस एज अंडरस्कोर एज, yes can I age age ही क्या नहीं, रोल नंबर है, रोल नंबर, यस रोल नंबर आई कैन एक्सेस। कैन एक्सेस मार्क्स, मार्क्स एक्सेस कर सकता हूँ, यस मार्क्स भी एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन ये देखो मैंने एक फील्ड यहाँ पे क्रिएट किया, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर
सपोज उसका खुद का कुछ डेटा है, ओके, जस्ट लाइक सपोज इट्स आधार कार्ड नंबर, ओके, आधार कार्ड नंबर, ओके, और वो कुछ तो ऐसे कुछ तो है वैल्यू, ओके, सो दिस इट्स आधार कार्ड नंबर, ओके, और ये मैंने डायरेक्टली दे दिया है। ये आप यूजर से भी ले सकते हो कि यूजर से क्या आधार कार्ड है और इस तरीके से, लेकिन मैंने अभी सिंप्लिसिटी के लिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे इनिशियलाइज किया है। लेट्स ट्राई टू एक्सेस दिस आधार कार्ड नंबर, अंडरस्कोर अंडरस्कोर, क्या नाम है उसका, आधार कार्ड number. Let's see here. Now it will show the error that student object is not having the attribute called as a Aadhaar card number. Getting that? तो ये देखो आधार कार्ड नंबर तो है इसके अंदर, लेकिन एक्सेस नहीं हो रहा है। क्यों नहीं एक्सेस हो रहा है? बिकॉज देयर इज 2 अंडरस्कोर इन फ्रंट ऑफ इट। अगर कोई भी वेरिएबल होता है उसके सामने अगर 2 अंडरस्कोर होता है, इट इज कॉल्ड एज स्ट्रिक्टली प्राइवेट वेरिएबल। इट इज कॉल्ड एज स्ट्रिक्टली प्राइवेट वेरिएबल। यू कैन नॉट एक्सेस आउटसाइड द you cannot access that variable outside the class. Getting that? So it is called as strictly private. Generally in Python, in the Java में हम कैसे करते हैं strictly private? We'll put the private keyword, private integer a is equal to 10. Okay, now this a is now private, strictly private. याद है आपको? Yes, are you getting, Chetan? यस, याद है? अगर याद होगा तो यस, इजी होगा मेरे लिए। ओके ओके, तो देखो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं कि प्राइवेट वेरिएबल। इफ देयर आर 2 अंडरस्कोर इन फ्रंट ऑफ द वेरिएबल, इट्स कॉल्ड एज अ प्राइवेट वेरिएबल, एंड इफ देयर इज ओनली सिंगल अंडरस्कोर, इट्स कॉल्ड एज अ प्रोटेक्टेड वेरिएबल, एंड इफ देयर इज अ नो अंडरस्कोर इन फ्रंट ऑफ इट, देन इट्स कॉल्ड एज अ पब्लिक वेरिएबल। ये एप्टीट्यूड क्वेश्चन है आपका, आप इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि हाउ टू क्रिएट पब्लिक वेरिएबल, प्रोटेक्टेड वेरिएबल एंड प्राइवेट वेरिएबल इन पाइथन। ओके, तो सिंपल है, अगर कुछ अंडरस्कोर नहीं दिया है तो पब्लिक, अंडरस्कोर दिया तो प्रोटेक्टेड, और 2 अंडरस्कोर दिया तो प्राइवेट। ओके, तो यहाँ पे देखो 3 वेरिएबल क्रिएट किए, और यहाँ पे डिस्प्ले में हमने काउंट मैंने यहाँ पे फंक्शन काउंट वेरिएबल मैंने प्रिंट किया है, और INCR है, INCR, and in the INCR the count is incremented by 1. So it means that when I create the object of index and when I call INCR function, the count will be automatically incremented, and the count variable is not a class specific, it is a object specific. ये ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक है। ओके, तो ये देखो न्यू इंडेक्स अभी नया क्लास क्रिएट किया, वी हैव क्रिएटेड द न्यू क्लास, बट दिस न्यू क्लास वी हैव क्रिएटेड यूजिंग द एग्जिस्टिंग क्लास। तो वी कैन से दैट हियर वी आर इनहेरिटिंग द एग्जिस्टिंग इंडेक्स क्लास। तो इनहेरिटर्स में क्या होता है जनरली, व्हाट हैपन विद द इनहेरिटर्स में क्या होता है, व्हाट एवर द डिफॉल्ट मेंबर्स, जो भी डिफॉल्ट मेंबर है, डिफॉल्ट मतलब पब्लिक, नॉट डिफॉल्ट, पब्लिक मेंबर, all the public variables and the public method will be automatically made available in new index class. तो अगर मैं न्यू इंडेक्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो आई कैन कॉल डिस्प्ले, आई कैन कॉल INCR। यस, ये तो पता होगा आपको कि when we are inheriting the existing class, it's all the public variable and the protected variable get ready-madely available in the derived class. Yes, are you getting, are you know this concept? ये पता है आपको? इनहेरिटर्स में क्या होता है, जब आप एक एग्जिस्टिंग क्लास से अगर एक नया क्लास बनाते हो तो कौन कौन से वेरिएबल या मेथड इनहेरिट होते हैं? पब्लिक एंड द प्रोटेक्टेड, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। तो ये देखो, ये वैर है ना, ये वैर इनहेरिट नहीं होगा, लेकिन काउंट इनहेरिट होगा, वैर इनहेरिट होगा, ओके, डिस्प्ले इनहेरिट होगा, INCR will be inherited. So these all 4 will be made available in a new index class. तो देखो न्यू इंडेक्स क्लास का खुद का भी एक कंस्ट्रक्टर है। सो व्हेन यू कॉल द न्यू इंडेक्स क्लास ऑब्जेक्ट, देन वी आर कॉलिंग इट सुपर क्लास इन इट आल्सो। ये कंपलसरी है, देखो ये कंपलसरी है, इट इज कंपलसरी इन अ C++ और जावा, इट इज नॉट कंपलसरी इन अ C++ और जावा। व्हाट हैपन व्हेन यू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव क्लास, जब भी आप डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो सुपर क्लास का या बेस क्लास का ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। पहले बेस क्लास का क्रिएट होता है, उसके बाद में डिराइव क्लास का क्रिएट होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं होता। यहाँ पे
अगर आपको अगर डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो अगर आपको बेस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है ना, तो आपको यू हैव टू एक्सप्लिसिटली राइट डाउन इन द कंस्ट्रक्टर ऑफ द डिराइव क्लास ऑब्जेक्ट। डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट, डिराइव क्लास के कंस्ट्रक्टर में आपको एक्सप्लिसिटली वहां पे लिखना पड़ेगा कि मैं इनिट फंक्शन कॉल करना, किसका कॉल करना है, बेस क्लास का। तो बेस क्लास कैसे एक्सेस करेंगे, सुपर कीवर्ड से हम वी कैन एक्सेस द बेस क्लास मेथड्स। सुपर कीवर्ड से वी कैन कॉल द बेस क्लास मेथड। ओके, तो सुपर डॉट हम करेंगे और इनिट फंक्शन हमने कॉल किया। सो वी आर कॉलिंग द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर फ्रॉम द डिराइव क्लास। ये कंपलसरी है, कंपलसरी है। अगर ये नहीं करते तो बोलेगा कि वैर क्या है पता नहीं, काउंट क्या है पता नहीं, डिस्प्ले क्या है पता नहीं, आईएनसीआर क्या है पता नहीं है। Okay, so it has to be created when you are calling the constructor of the base class. Okay, now next one is, अभी न्यू इंडेक्स के पास क्या क्या है, न्यू इंडेक्स। आप बोलोगे सर न्यू इंडेक्स के पास तो सिर्फ DCR फंक्शन है। नहीं नहीं, DCR तो है, लेकिन उसके साथ क्या क्या है, INCR भी है, उसके साथ डिस्प्ले भी है, उसके साथ वैर भी है, उसके साथ अंडरस्कोर काउंट भी है। सो यस, वी कैन कॉल द अंडरस्कोर काउंट, we can call the var, we can call the display, we can call INCR, we can call the DECR. ओके, तो पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से फंक्शन है। तो यस, हाउ टू गेट द फंक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट dir ऑफ i। लेट्स सी हियर, मेरे देखो dir ऑफ i में क्या क्या है, देखो तो ये तो बाय डिफॉल्ट है, देखो अंडरस्कोर काउंट है, देखो अंडरस्कोर काउंट है, DCR भी है, डिस्प्ले भी है, INCR भी है और वैर भी है। लेकिन आपको कहीं पे वैर दिखा क्या, ये अंडरस्कोर वैर नहीं दिखा यहाँ पे, ये अंडरस्कोर वैर इज एब्सेंट हियर। Why underscore var is absent? Because it is a strictly private variable. It is only related to the index. It is not inherited. It is not inherited. So if you want to create a variable which is only made available in this class only, then create that variable as a private variable. कोई प्राइवेट लिखना नहीं पड़ता, सिर्फ हमें क्या करना है, टू अंडरस्कोर लगा दो उसके सामने, इट बिकम अ प्राइवेट, इट बिकम अ प्राइवेट। गेटिंग दैट? यस, आर यू अंडरस्टूड दिस? जस्ट टाइप गॉट इट इन द चैट बॉक्स अगर ये समझ में आ गया आपको। अभी हम क्या करेंगे, वी विल क्रिएट द विल कॉल दैट INCR फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, i.incr। सो कैन आई कॉल द INCR फंक्शन यूजिंग i? I is a object of new index. I is a object of new index. I is a object of new index. New index का object है, लेकिन मैं INCR फंक्शन कॉल कर रहा हूं। न्यू इंडेक्स में तो INCR है ही नहीं, न्यू इंडेक्स इज नॉट हैविंग द INCR. So can I able to call it? Yes, Aditya, can you tell me? INCR, can I able to call the INCR function? Aditya will answer only. 108. Tell me, if the new I is a object of new index class and I'm calling the INCR function using that object, can I able to call that INCR function? Yes, yes. Why? Because it is present. देखो आप, इसमें प्रेजेंट था, ये हमने dir ऑफ i किया था तो ये प्रेजेंट है, तो यस आई कैन कॉल इट। आप देखो, ये देखो कोई एरर नहीं आया। यस, I can display it. Display कैसे? Can I call display function again? Yes, you can call display because display is a public function in index. तो ये रेडीमेड अवेलेबल हो जाएगा इसके अंदर। ओके, तो देखो डिस्प्ले, तो अकाउंट कितना हो जाएगा, काउंट 1 हो गया, काउंट इज 1। INCR एक बार किया ना तो हो गया, लेकिन अगर मैं INCR 2 बार कॉल करूंगा तो इट शुड बी नॉट सेमीकोलन, सेमीकोलन नहीं चाहिए, काउंट इक्वल टू 2। देखो हो गया। ओके, अगर मैं 3 बार कॉल करूंगा तो क्या होगा, i.incr काउंट इक्वल टू 3। गेटिंग दैट? ओके, अगर मैं DCR, कैन आई कॉल DCR फंक्शन? DCR, after calling the DCR function, I'm calling the display function DRSPLA. देखो I dot DCR, so print dot var. Yeah, actually it should not be there. देखो काउंट कितना हो गया, 2 हो गया, काउंट इक्वल टू 2। DCR, फिर से मैं DCR कॉल करूंगा, DCR, एंड फिर से मैं I डॉट डिस्प्ले करूंगा। देखो
पहले 3 था, अभी 2 हो गया, अभी 1 हो गया, डिक्रीमेंट किया, फिर से इंक्रीमेंट करना है तो आई डॉट incr फंक्शन, अगेन डिस्प्ले इट, हो गया, काउंट इक्वल टू 1 था तो अभी 2 हो गया. Getting that? So yes, I can call the functions of the base class using the derived class object. बस यही बताना चाहता हूं मैं यहाँ पे. Okay, I can call the functions of the base class using the object of the derived class. Object of derived class से मैं base class के function में call कर सकता हूँ. Okay, can I call this? Can I access this underscore count directly? Underscore count में direct access कर सकता हूँ क्या? Check करके देखो. देखो कर सकता हूँ. यस इट इज पॉसिबल. ऑब्जेक्ट किसका है? डिराइव का. लेकिन ये अंडरस्कोर काउंट किसका है? बेस का. तभी भी मैंने एक्सेस किया. व्हाई? बिकॉज इट इज अ प्रोटेक्टेड वेरिएबल. प्रोटेक्टेड वेरिएबल एक्सेसिबल. पब्लिक वेरिएबल एक्सेस कर सकता हूँ. कैन एक्सेस पब्लिक वेरिएबल? वैर, या पब्लिक वेरिएबल एक्सेस कर सकता हूँ. वैर इज 0. वैर इज 0. गेटिंग दैट? वैर 0 है तो मैं कर सकता हूँ. कैन आई एक्सेस इज अंडरस्कोर वैर? करके देखते हैं. अंडरस्कोर वैर नहीं हो सकता. न्यू इंडेक्स ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अंडरस्कोर वैर. व्हाई? बिकॉज अंडरस्कोर वैर दिस इज द प्राइवेट मेंबर ऑफ द इंडेक्स. तो प्राइवेट मेंबर ऑफ द इंडेक्स क्लास, तो बेस क्लास का प्राइवेट हो गया, तो प्राइवेट मेंबर इज नॉट अवेलेबल इनटू द डिराइव क्लास. डिराइव क्लास में वो नहीं हो सकता. यस, गेटिंग दिस? तो ये अभी भी याद रखना है. अगर आपको ऐसा कोई मेंबर बनाना है कि वो क्लास के बाहर नहीं एक्सेस करेंगे, तो आप क्या करोगे? उसके सामने डू अंडरस्कोर लिख दो, सो इट बिकम द प्राइवेट मेंबर. तो सिंपल यहाँ पे देखो, where treat this as a public variable, underscore where treat this as a protected variable, and underscore where treat this as a private variable. Okay, our protected variable should be accessed only in a class hierarchy, in the same class and the derived class. Okay, same class में और derived class में कर सकते हैं. लेकिन अगर फिर से एक बार क्लास किया मैंने, if I have related one more time that new index से मैंने और एक नया क्लास बनाया, so I cannot access that underscore where in a third hierarchy. थर्ड लेवल में मैं एक्सेस नहीं कर सकता. That's what is called as a protected variable. Protected variable. ये वही है सेम मैंने जो एक्सेस, मैंने अभी आपको सब एग्जांपल जो दिया था वही. Now this is the two method. Generally this method is used if you want to check that what is the relationship between the object. ऑब्जेक्ट दिया है या क्लास दिया है, उसका रिलेशनशिप क्या है वो देखना है. तो हम इज इंस्टेंस और इज सब क्लास हम यूज कर सकते हैं. सपोज जैसे कि आपको ऑब्जेक्ट दिया है और क्लास दिया, आपको पता नहीं है कि ऑब्जेक्ट जो दिया ना वो इस क्लास का है कि नहीं, वो चेक करना है. सो यस यू कैन सी हियर. और यहाँ पे देखो माय क्लास इज देयर. माय क्लास में कुछ भी नहीं है. ओके, index and new index class is there, but new index class is a subclass of the index class. New index class is a subclass of index class. ये इसका relationship है, but there is no relationship between my class. तो देखो मैंने एक I is equal to new index किया और J equal to index किया. ओके, तो पहले हम करेंगे is instance I dot new index. Yes, I और new index इसमें कुछ relationship है क्या? Instance है क्या? Instance मतलब क्या है कि उसका object है क्या? I is a object of new index है क्या? Yes, is it the object of, is I is a object of new index? Yes, tell me. Yes, is it there? यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है देखो, I is a object of new index class. So yes, it's print true. It prints true. Getting? चेक करेंगे is instance j comma new index. J इंडेक्स का, J जो ऑब्जेक्ट है वो इंडेक्स इस क्लास का ऑब्जेक्ट है क्या? यस इट इज देयर. सो यस, सो इट रिटर्न्स ट्रू. रीडिंग दैट. अभी हम करेंगे J जो ऑब्जेक्ट है वो न्यू इंडेक्स का ऑब्जेक्ट है क्या? न्यू इंडेक्स का. J इज नॉट अ ऑब्जेक्ट ऑफ न्यू इंडेक्स क्लास, तो इट विल रिटर्न फॉल्स. ये फॉल्स रिटर्न करेगा. ये क्या देगा? फॉल्स देगा. अभी हम करेंगे सब क्लास करेंगे. न्यू इंडेक्स क्लास और इंडेक्स के बीच में सब क्लास कुछ रिलेशनशिप है क्या? इज द न्यू इंडेक्स क्लास इज अ सब क्लास ऑफ इंडेक्स क्लास? इज न्यू इंडेक्स क्लास इज अ सब क्लास ऑफ इंडेक्स क्लास? मतलब न्यू इंडेक्स क्लास डिराइव है और इंडेक्स क्लास बेस क्लास है, ऐसा है क्या? यस ऐसा है, तो इट विल रिटर्न ट्रू.
लेकिन हमने क्या उसका पोजीशन चेंज कर दिया। मैंने अभी क्या चेंज कराओ, चेक कराओ, इज इंडेक्स क्लास इज अ सब क्लास ऑफ न्यू इंडेक्स क्लास। देखो इंडेक्स क्लास न्यू इंडेक्स क्लास का सब क्लास है क्या? नहीं है। न्यू इंडेक्स क्लास इज ओन क्लास, उसका कोई भी सब क्लास नहीं है, तो बोल सकते हो कि इट इज अ फॉल्स, इट इज अ फॉल्स। और हम चेक करेंगे माई क्लास और इंडेक्स, इसमें कुछ रिलेशनशिप है क्या? माई क्लास और इंडेक्स नहीं है, तो यस इट विल रिटर्न फॉल्स, इट विल रिटर्न फॉल्स। सो यस, each instance किस लिए यूज होता है? each instance we generally use to check whether the object is a class of that particular class. Each subclass method is generally used to check that is this class is a subclass of this particular base class or not. तो relationship find out करने के लिए generally we use these two methods. Yes, are you getting this? Yes, Chetan, Aditya, are you getting this? Each instance and each subclass. सिंपल है, रिलेशनशिप देखने के लिए, रिलेशनशिप देखने के लिए जैसे जैसे हम देखो, अगर मैंने यहाँ पे किया a इज इक्वल टू 10, अगर ऐसा है तो मुझे चेक करना है, मुझे चेक करना है कि ये जो अपना a ना, ये फ्लोट है क्या, चेक करना है। मुझे पता नहीं है कि a में क्या वैल्यू है, आई डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, एक्चुअली वहां पे लिखा है, बट लेट्स सी हियर व्हाट इज द टाइप ऑफ द a, आई डोंट नो। तो मुझे चेक करना है, तो मैं करूंगा प्रिंट और सिंपली मैं करूंगा इफ इज इंस्टेंस a कॉमा, और मैं यहां पे करूंगा f फ्लोट होता है आई थिंक, फ्लोट, तो और सिंपली इंटीजर, पहले int करते हैं। ओके लेट्स लेट मी सी, आई थिंक f स्मॉल में होता है, या स्मॉल में होता है आई थिंक int, या यस स्मॉल में होता है। ओके तो हम करेंगे प्रिंट a is integer, okay, elif is instance a comma float, अगर ये float है तो हम प्रिंट करेंगे प्रिंट a is float, ओके। तो अभी आउटपुट क्या आएगा? यस टेल मी, a is a integer, लेकिन अगर मैं 10.5 कर दूं तो a is a float, okay. So this program will check that what is the type of a float है या a integer है, a float है a integer। Yes, got it. The last point is the inheritance type. So there are these 4 types of inheritance: single inheritance, multi-level inheritance, hierarchical inheritance, and the multiple inheritance. So actually single inheritance we have seen, multi-level inheritance is very simple. You have to make some levels. Class A is the base class of the class B, and class B is the base class of class C. So this is called the multi-level. Hierarchical inheritance भी हो सकता है, it is also possible. Class B also inherit class A, class C also inherit class A. Okay, that is called hierarchical. Multiple inheritance is also there. Multiple inheritance में होता है कि class C is inherited from class A and class B. Java doesn't support multiple inheritance, but the Python supports multiple inheritance. Python में supported है multiple inheritance. तो कैसे करते हैं? सिंपल है, दो बेस क्लास है, देखो, 2 बेस क्लास having the 2 variables underscore var or underscore var2, var1 or var2. Okay, now I want to make one derived class. I want to make one derived class. First I have to inherit base 1 and second I have to inherit base 2. Okay, तो base 1 का भी init function call किया और base 2 का भी init function call किया. Okay, and in the derived class I can call, I can access the var1 also and the var2 also. So var1 is from base 1 and the var2 is from base 2. So therefore var1 and var2 both can be accessed. Yes, but there is no such a actually applications of multiple inheritance, but there is, this point is there. You can just read out this and what is the use of, अगर आपने C++ में multiple inheritance अगर पढ़ा है तो ये आपको easily understand हो जाएगा कि what is the use of multiple inheritance here. But in our data science and OpenCV, actually there is no need of this multiple inheritance. That's why I've taken only a single example of this. Yes, students, are you getting this, all the topic? Type yes in the chat box if you get the class and objects and the containership and inheritance.
यू कैन रिवॉच, अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप क्या कर सकते हो, आप ये पूरा जो लेक्चर है आप फिर से एक बार देख लो, खुद से ट्राई करो, then only you can able to understand. You can also watch the videos from the YouTube also to get more knowledge about this topic. Okay, so yes, any doubt? We will end the meeting here because it's already 5:50. So yes, 5 minute question answer session. If you have any doubts or question, you can ask. If no doubts, if you're not having any doubt, you can see the recording of this also. Afterwards, I'm going to share this.